दोस्तों, पहली बात तो ये है कि पुतिन साहब तो पहुंच गए हैं इंडिया, और पुतिन साहब के इंडिया पहुंचने का मतलब ये है कि इंडिया इस वक्त पूरी ग्लोबल जो मीडिया है उसकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है. As the embattled Russian leader heads to New Delhi to meet with Narendra Modi. Now, President Vladimir Putin is beginning a 2-day visit to India today, seeking to deepen defence ties, even as New Delhi faces growing US pressure to stop buying Russian oil. The Russian leader making his first trip to India since the start of the Ukraine war. दोस्तों, रशिया ने एक ऐसा डिप्लोमेटिक बॉम्ब गिरा दिया है जिससे ग्लोबल पावर बैलेंस जो है वो हिल सकता है, क्योंकि वहां पे सिचुएशन ही ऐसी है. Everybody wants to talk on Putin's visit to India. Everybody wants to engage and know कि ये क्या हो रहा है. चाह क्या रहे हैं. दिल्ली में ये सोच बहुत ज्यादा, उनके पॉलिसी मेकर्स में सोच बहुत ज्यादा पाई जाती है कि हमें इस वक्त रूस के करीब होना है. अब तो इंडियन एक्सपर्ट्स इस पे बाकायदा तौर पे खुल के लिख भी रहे हैं. So let's take a listen to what Dmitry Peskov said to Indian journalists ahead of Putin's visit. हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें. अमेरिका के अंदर कुछ कांग्रेसमैन ने एक लेटर लिख दिया पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के खिलाफ. अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी कि अमेरिका की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको अकाउंटेबल ठहराए और सैंक्शंस लगाए, वीजा बैन करे, एसेट फ्रीज करे. ठीक है जी. और सिस्टमैटिक रिप्रेशन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर. इसको इंडिया के अंदर बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटेरियन सिस्टम है, वो वहां पे रिप्रेशन है. 44 अमेरिकी कांग्रेसमैन का ये जो लेटर है मार्को रूबियो को, और इसमें अमेरिकी जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट को वो ये कह रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच को, कि भाई आप ऐसे करें. और वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं मुनीर के खिलाफ सैंक्शंस लगाई जाएं और ये वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां. बहुत सारे लोग तो इस पे बहुत क्रिटिसाइज भी करेंगे कि भाई अमेरिकी कांग्रेस जो है उसको चाहिए कि वो इंटरनल मामला देखे, दूसरे मुल्कों में क्यों देखते हैं. पाकिस्तान के अंदर ये तासुर बड़ा क्लियर है कि ये लॉबिंग फर्म्स हैं बेसिकली अमेरिका के अंदर. क्या है? लॉबिंग फर्म्स. ये लॉबिंग फर्म्स जो हैं इनको पैसे देते हैं इमरान खान. इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान है जो कि पाकिस्तान की फौज को टारगेट कर रहा है, और वो इसलिए कि वो जेल में है. वो कहता है जनाब कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसम मुनीर जो है वो उनके खिलाफ सैंक्शंस लगाएं, वो अथॉरिटेरियनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, और वीजा बैन किया जाए पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स के ऊपर. और ये जो जनरल मुनीर हैं ये इन्वॉल्व हैं इन चीजों में, पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है. ठीक है ना जी. टारगेटेड सैंक्शंस हों मिलिट्री गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले से. ठीक है ना जी. यूएस गवर्नमेंट जो है उसको रिस्पांस देना चाहिए कि पाकिस्तान ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में इन्वॉल्व है ऑफ यूएस सिटीजन्स एंड रेजिडेंट्स. ये कौन से यूएस सिटीजन्स हैं भाई? New Delhi trying to maintain decades-old ties to Russia, dating back to its independence, without pushing, of course, Washington or Europe away at a time of strained relations. Well, we're going to discuss all of that with our international affairs commentator, Doug Herbert. Doug, first of all, who gets most out of this summit? If I have to get off the fence, I'd say Russia is. Look, for Vladimir Putin, what is this visit about? It's basically a giant message that he is sending to the rest of the world, but especially to Europe and the United States. Look at how unisolated I am. Look at how little of an outcast, how little of a pariah Russia actually is. It's me
not you, who is right now at the center of this new geopolitical emerging world order, this multipolar world. Not the U.S., not Europe. Europe is the isolated one. Europe has failed. That said, the reason I think Russia's getting more out of it is look at the circumstances, euphemism if ever there was one. Russia right now, it's the fourth year of an unprovoked war of aggression against Ukraine, desperately needing funding for that war, coming, a month or so after the United States, in a signal move, slapped stiff sanctions against Russia's two biggest oil giants, Rosneft, Lukoil, who contributed at one point, a large, sizable chunk of Russia's budget revenues. In that context, he is coming to India, what has India done for Putin? Well, India has been upping and buying large volumes of that oil that Putin has not been able to sell to almost anyone else in the world, save for China and a few other smaller customers. So India, in that sense, is a giant market for the Russian oil, a necessary market. And just to give you a sense of how necessary, before Russia's invasion, full-scale invasion of Ukraine, 2022, the imports, Russian imports to India were about 2.5% of India's imports were from Russia. Since then, it has spiked because of the discounted price of oil that Russia has sold to India at. It has gone up to about 35%. So 2.5% before the war, 35% of India's oil imports now from Russia, a third of them. That is giant. Now, they've gone down. India last month really bought almost no oil from Russia after those sanctions were adjusted, but they will find ways to ramp those up again. Plus, you mentioned energy, defense deals. There are a lot of those right now. Look, India is a market of 1.4 billion people. It has a giant, fast-growing economy, about 8% right now. Those are not statistics you can sneeze at. If you're Vladimir Putin up against in a geopolitical corner right now, with a war in Ukraine, talks on that war, and being considered a pariah by much of the Western world, India is a giant geopolitical partner. You need it more than ever. Do you think that Modi will be interested in essentially in supporting his friend Putin? How does he? It requires very skillful diplomacy and management of this relationship. My take probably was a little bit different from the Lobson. I would say that the recent India-U.S. relationship is actually going downhill due to the fact not just because of the U.S. sanction on India and purchasing Russian oil, but also the United States is receiving the Pakistan army chief, as well as the President Trump his own call about what he played in terms of the Indian-Pakistan conflict, as well as what Indian term as an anti-terrorism war, but the President Trump basically called it a two-state conflict between two states. So the Indians' perspective is that the United States relationship is going downhill, and they have the China to manage, so that they wouldn't rely on Russia more. बेसिकली प्योरली एक लॉबिंग है अगेंस्ट पाकिस्तान। रशिया हमारे उस तरह के रडार में नहीं है जैसे कभी हुआ करता था, अब वो चीज नहीं है। एक वो चीज पता चल जाती है ना कि नो इट्स नॉट लाइक दैट। हम वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं करवा सके या वो कारोबार नहीं कर सके। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन आनी थी कराची से, वो नहीं बिल्ड हो सकी। सैंक्शंस उनके ऊपर इतनी लग गई हैं कि हमारी कंपनियां तो वो 2 मिनट में झटका भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। इंडिया का तो खैर प्राइवेट सेक्टर बड़ा है, तो वो तो कुछ कंपनीज को अगर सैंक्शन किया गया है या वो उन्होंने हुआ है तो वो तो शायद बर्दाश्त कर जाए। हम कैसे करेंगे? हम इसको कैसे करेंगे इन सैंक्शंस को बर्दाश्त? तो ये एक आप समझ लें कि वो दी रशियंस डू नॉट ट्रैवल एनीवेयर जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग। बेशक इवन द रशिया जो है दैट इज अ कंट्री दैट इज आइसोलेटेड एट द मोमेंट, एंड उनको इस चीज की कोई परवाह नहीं है बिकॉज दे बिलीव इन द नेशनल इंटरेस्ट। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे बिलीव करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC A2Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।